Dear friends, today we are going to discuss about lesson number 3, that is Microsoft Paint. Microsoft Paint means MS Paint, you can say. Let's start. Microsoft Paint, that is frequently called Paint or MS Paint, is a simple graphics program to draw pictures on the screen and paint them with different colors. Suppose you want to let me tell you what is that, then I will go for some example. So what is the MS Paint means? It is one kind of application or software. Using that you can go for different pictures or figures, or using that you can go for some different colors also. Suppose let us go for one example. Suppose if I will ask you draw a national flag, so roughly you have to sketch that one, and according to the national flag color, if you want to use the different colors also, you can use it. So simply one step I will tell you that you have to draw the pictures with different colors using your Microsoft Paint. Are you understood or not, everybody? Then second is that what are the features? We can use Paint for creating, editing and printing pictures. तुम क्रिएट नया चीज़ को इन्वेंट भी कर सकते हो, क्रिएट भी, डिजाइन भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो. सपोज you have designed and you have written some wrong thing, that one also you can edit that one. Edit means you can erase it and you can write down the new things. And printing picture, suppose anything you have done or anything you have designed, that thing you need go for print out. If your national flag is very looking very attractive and you want to go for printing also, that you can go for print out, okay, using printer. We can draw different objects like pictures, cartoons, etc. Varieties of objects or varieties of cartoons, whatever you have seen, that thing you can draw, and you can make some colors also. We can also use Paint to view and edit scanned pictures. मीन्स कोई भी चीज़ को और कोई भी फोटोज़ को तुम देख के उसको एडिट भी कर सकते हो. ऐसा नहीं कि जो चीज़ ड्रॉ ही करोगे उसको ही एडिट कर सकते हो. एनी पिक्चर्स यू कैन edit also using MS Paint. These are the very important features of MS Paint. How to open Paint? Okay, how to open here, these are the steps are written. First of all, you have to click on the start button, then choose all programs and click on accessories, and here one option will be coming, that is Paint. Okay, so Paint, you have to click on that. Then one drawing area, extreme right side you see, that is the starting Paint window, you can say. Here the drawing area group, so here the ribbon in the sense different colors according to your use, you can use that one. Okay, next move to using tools. We can work in Paint with the help of shape tools. To select any shape, move the mouse pointer to the tool shape group and click on that. सपोज कोई भी शेप्स तुम्हें चाहिए, ओके, सपोज you need one circle, one square, one rectangle, so these are the shapes you can say. So you have to go for that shape button and you can collect the different shapes are available according to your requirement. You can collect or you can choose any one. After selecting the tool, move the mouse pointer to the working area. The pointer changes to cursor here plus symbol. So whenever we are writing the alphabets in the word page, it will be cursor, it will be one vertical line. But now whenever you are going to the Paint, MS Paint use, your cursor will be looks like plus symbol. Okay, accordingly you have to work using polygon tool. What is the polygon tool? Select the polygon tool from the shapes group. मतलब जहाँ पे shapes options है वहाँ पे polygon का tool है. Select the thickness of the line by clicking the size button. Okay, polygon means यहाँ पे एक size का button है. मतलब suppose you want to draw whatever pictures, how much thickness you want, कितना मोटा बनाना चाहते हो या कितना पतला बनाना चाहते हो वो figures को, you have to select the line also. Okay, according to lines polygon, then your picture
thickness accordingly will be vary. Okay, that will be vary. Select red color from the color group. तुम्हें रेड कलर इंटरेस्ट है और रेड कलर रिक्वायरमेंट है तो रेड कलर भी कर सकते हो. ड्रॉ ए लाइन ए बी बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग द माउस फ्रॉम ए एंड रिलीजिंग द बटन एट पॉइंट बी. सपोज एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, देन एक पॉइंट से माउस को क्लिक करके ड्रैग करना, दैट इज यू कैन से ड्रैग इट, एंड वेयर यू हैव टू रिलीज योर mouse leftly, then automatically one line will be draw, and that you can say from point A to point B, that is one horizontal line or one line you can say. Okay, next, now bring the mouse pointer to point D and click here. Further click at the left mouse button at E. So here by seeing the picture figure number 3.3, you can say using polygon tool, means using polygon tool we can design the star symbol also. Okay, so what you have to do, you have to drag from A to B, B to C, C to D, D to E, then E to A. In this way if you are going to design, automatically at last what you will get, one star symbol you will get. Okay, and आफ्टर दैट फिल विद द कलर. सपोज ये स्टार सिंपली तुम्हारा तो ड्रॉ तो हो गया. सो जो एरिया में जो कलर्स तुम्हें सिलेक्ट करना है, दैट यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो यूजिंग द फिल विथ कलर बटन. फिल विद द कलर बटन. देन नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग फोरग्राउंड कलर. सिलेक्टिंग foreground color. Click on the color 1 button. Now click on the red color and colors with group with which you earned the foreground color. Now select the fill with color tool and fill the star and yellow color. जो तुम कलर सिलेक्ट करना चाहते हो उसके हिसाब से fill with color you have to go and select the any color whatever you choose. Selecting background color. फोर्स कलर मतलब क्या है, तुम्हारा जो फिगर्स तुम ड्रॉ किए उसको ही चेंज कर सकते हो कलर्स में. बट बैकग्राउंड मीन्स व्हाट, पिक्चर विल बी रिमेन सेम बट बैकग्राउंड कलर विल बी डिफरेंट इफ यू वांट टू चेंज. आर यू अंडरस्टूड? नाउ क्लिक ऑन द कलर 2 एंड देन क्लिक ऑन द लाइट येलो कलर इन द कलर ग्रुप टू सिलेक्ट द बैकग्राउंड कलर्स. ओके, सेम थिंग, fill with color you will go for that and you can change your background color using airbrush tool. What is the using airbrush tool? Select any color from the color groups, click on the brushes tool and select airbrush option. Select the desired spray size from the size button. Move the mouse pointer onto the dragging area. Click the mouse button on the area where you want to spray the color. Okay, in the same manner you can make use of other brush also. सो एयर ब्रूश का काम क्या है, सपोज कोई भी पिक्चर में तुम पिक्चर्स बहुत बड़ा है, एयर ब्रूश को सिलेक्ट करके कोई भी कलर्स को सिलेक्ट करना. वंस यू हैव टू ड्रॉप डाउन और वंस यू हैव टू क्लिक ऑन दैट ओवर द पिक्चर्स, योर टोटल कलर विल बी चेंज्ड. मीन्स योर पिक्चर विल बी remain same color whatever you want or whatever color you have to choose. Okay, these are different options are there, you can use it according to your comfortable zone. Okay, then using color picker tool. Color picker tool means what? Color picker tool is a very useful tool to select a color from an existing object and filling it into any other object. Let us learn how to use it. You see, draw the object as shown in the 3.7 picture. It is showing to you a picture तुम्हें show कर रहा है ना using color picker tool. Color the rectangle only. अभी क्या है, इधर जो rectangle show कर रहा है ना उसको ही हमें एक red color करना है. Okay, let us go for red color using fill with the color tool. Then select the color picker tool. Just it is just like a small pen, you can say that icon, it looks like small pen. Click inside the rectangle object to copy the color. मतलब उसके अंदर तुम जाके copy करो. Move the mouse pointer and click inside the circle to fill the same color in it.
एक बार जो भी कलर सिलेक्ट करोगे और रेक्टेंगल शेप के अंदर जाके क्लिक करोगे, देन इट विल बी चेंज द कलर ऑल्सो. नेक्स्ट, एडिंग टेक्स्ट इन ए शेप. सपोज कोई भी शेप तुम ड्रॉ किया या चूज किया तुम्हारा शेप्स में जाके, देन उसके अंदर तुम्हें कुछ लिखना है और कुछ सेंटेंस या कुछ वर्ड्स लिखना है या मेंशन करना है. ओके, सो हाउ टू डू दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट एनी शेप फ्रॉम द शेप ग्रुप ऑन द होम टैब. शेप के अंदर तुम्हें जाना है, ये कौन सी शेप को सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट द क्लाउड शेप एंड ड्रॉ इट ऑन द ड्राइंग एरिया. ऑब्वियसली कोई भी शेप्स को हम लोग सिलेक्ट करके उसको चूज रखना है. नाउ सिलेक्ट द टेक्स्ट टूल. टेक्स्ट टूल जहाँ पे बटन है वहाँ पे क्लिक करना, दैट इज कैपिटल A बटन लुक्स लाइक, दैट इज योर टेक्स्ट टूल. एंड सिलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द कलर ग्रुप. तो एक बार कैपिटल A बटन को क्लिक करके वहाँ पे कोई भी कलर्स को चूज करना. क्लिक इनसाइड द शेप एंड ए डॉटेड रेक्टेंगुलर अपीयर विल बी द कर्सर इनसाइड इट. मतलब a dotted cursor rectangle shape will be coming inside that. Whatever you want to or whatever you want to text it, that you can write. Okay, and you can go for different style also, there is no problem. The next is the last one, that is saving and opening a drawing. How to save, and once you have done that thing you need to save or not. Okay, otherwise your work is no use at all. Saving the drawing. It is important to save your work in between so that you do not lose in it in case of power failure. So obviously if suppose you are working with MS Paint, if suddenly your power is going to off, your file must be saved, then only it will be open easily. Otherwise it is goes erase, or it is going to erase permanently. So again you have to go for hard work. It is important to save your work in between so that you can do not lose in case of power failure. Draw any picture in Paint. Click on the Paint button and select the Save option. Left side Save button is there. That side you have to click on the Save button, and you have to give some file name. Whatever you want to give your file name. Suppose your name, yeah, any picture name, whatever, means it is for easier identification. कहाँ पे रखोगे तुम्हारा फाइल को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें सेव करना पड़ेगा और फाइल को कुछ नाम देना पड़ेगा. लास्ट वन, ओपन द सेव्ड ड्राइंग. जहाँ पे तुम फाइल को सेव किया है उसको कैसे ओपन करोगे. क्लिक ऑन द पेंट बटन मेन्यू एंड सिलेक्ट द ओपन ऑप्शन. द ओपन विंडो अपीयर. सिलेक्ट द फाइल नेम फ्रॉम द लिस्ट. एक बार पेंट में ओपन करोगे, जितना सारे के सारे फाइल्स तुम्हारा सेव हुआ है, all the files are going to be going to share with you. So according to your requirement you have to select that particular file and you can open it. Okay, I hope everybody understood about this thing.